जय माता दी आदेश। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू द इवनिंग सेशन ऑफ मार्केट एनालिसिस। मेरा नाम है विशाल एंड दिस इज 618th एपिसोड ऑफ लाइव एनालिसिस. So today is 15th of August, so happy Independence Day to all of you. And today markets are closed. So uh, let's do the weekly analysis for this truncated week. So we will have, I think, only 4 days left for trading: Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. So good evening. All right, so let us start today's session. So as of now, US market, the futures are down. So S&P 500 futures are slightly down by 0.5%, and the Nasdaq futures are down by 0.5%. European markets are also pretty much trading in the red. So ग्लोबल क्यूज इस समय थोड़े से बेरिश हैं, कुछ खास बेरिश नहीं है, बट स्लाइटली थोड़ा सा जो है एक बेरिशनेस है. ओवरऑल अगर मार्केट्स की बात करें तो इक्विटी मार्केट स्टिल दे आर होल्डिंग ऑन द सपोर्ट्स, दे आर breaking the resistances, making higher highs, higher lows. So the markets are still bullish, and S&P 500 last week it broke above the 233 moving average, which is a very positive sign, and this was the candle. So the breakout above the key moving average was very substantial, and that's why it even went higher. So as of now, any pullback in the US market will have a 4200 as a good support, 4190 and 4200 S&P futures पे काफी अच्छा एक support होगा. So any dip that comes here can be bought with stop loss of 4080 for another set of a rally towards 4350, 4360. Now going forward, I think this week will be little important in the sense that I think we are approaching next 5 to 10 days. I think we are approaching some crucial time cycles which are coming, uh, particularly around the month end, 29th of August. So I think the next 2 weeks, or you can say next 7 to 8 trading sessions in particular, we are going to enter in a significant price and time conjunction where a potential top should be made in the market. So it should be made in the US market and also in the Indian market. Now, what happens after that, we will have to see. We can see a good decline correcting the overall rally by a good 70-75%, or we can see a shallow correction followed by a new bull market towards all-time high. So all in all, next जो कुछ 2 हफ्ते हैं, 5 से 10 सेशंस कह सकते हैं या 2 हफ्ते कह सकते हैं, that is going to be very important. So I think these markets, they are going to take some pause as of now, and probably they will move higher, continue the bullish trend, but with some sort of tepid action, some sort of technically making a rising wedge structure or something like that. And somewhere in the last week of August, I'm expecting these markets to make some sort of a top over here. So 4350 se leke 4400, that is going to be a crucial entire zone in the US market that I will watch. On the downside right now, you have very good support at 4180, 4200, जो कि एक buy on tip का यहाँ पे एक अच्छा support area. Now let's talk about the Nasdaq. So Nasdaq ने अपने again Nasdaq has also reached the 13,600 level, जो कि last time एक target दिया गया था from 12,900 to 13,600. So I think Nasdaq अभी भी bullish है. Nasdaq का chart काफी strong है as of now. So any dip that comes near 13,000 is a buying opportunity for again good 1,000 points of move. If I talk about the German market, so German markets and all the European markets, they are still under a long-term bear market, and any sort of a rally that will be faced with resistance, I think they will also peak out, and they will be the first one to crack on the lower side. So I'm expecting huge downsides coming in the German markets, and German markets are expected to make a significantly new low in the coming weeks and coming months. So, from a fundamental point of view, the energy crisis is going to hit Germany to a large extent, and Germany is the most important economy in the entire European Union area. So, I think bearishness is there in the German markets. It's just a matter of time when the next downside starts, and that will drag all the European equities along with it.
that will also have a bearish impact on the euro. So we are already bearish on the European forex market, noticeably the euro and the British pound. So I think energy crisis is going to hit these guys very badly in coming few weeks and few months. Let's directly come to the forex market. So we can see the US dollar. It has retraced all the loss that was there in last week, and this is what I had discussed, that I'm bullish on US dollar. I don't think this is the final top. I think there is a one more up move that should come towards 110 and $112, and that should be the final top in the US market, and sorry, in the US dollar. And this last leg should be accompanied with some significant decline in the equity markets, and possibly the top in the US dollar and the bottom in the equity market should coincide, should go hand in hand. So हम इस पे जो है bullish है, and good to see that it has reclaimed. Now, if today the Indian markets were open, then today we could have got good profits in the forex short trades that we have carried over the weekend. Now, today, one important news came from the Chinese central bank. So they have reduced the interest rate by 10 bips, which is very unique, क्योंकि आज के अभी इस टाइम में सारे सेंट्रल बैंक्स जो हैं ये अपना इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहे हैं। चाइनीज जो है इन्होंने ऑपोजिट वे में जाते हुए इन्होंने रिड्यूस किया है। सो दैट इज प्लेइंग सम इफेक्ट विद द यूएसडी जेपीवाई। सो यूएसडी जेपीवाई जो है अभी बेरिश है। ओवरऑल इस पे वही है व्यू हमारा कि आई थिंक वंस वी टेक आउट द $135 लेवल, देन वी विल सी द न्यू हाइस। फॉर द टाइम बिंग आई थिंक इट हैज गुड सपोर्ट एट 130 से लेके 135, ये $5 के बीच में ये मुझे दिखाई दे रहा है। अगर हम ब्रिटिश पाउंड की बात करें तो ये बेरिश है, इस पे हमने डिस्कशन पहले भी किया हुआ है, एंड आई सी this currency slowly giving away. So I think the time is ripe. I think it's just a matter of time when they crack eventually. So sell on rise हम काफी दिनों से मेंटेन कर रहे हैं और इस पे मेंटेन करेंगे। यूरो के अगर चार्ट को हम देखें तो it is already sitting at the last support. You can see this is the chart of the euro USD, and we are in this rising wedge structure, and once we start the journey, I think we are going to towards 0.95, so which is again a very big plunge. This is the story of euro. Every time it is doing that same thing. It makes some consolidation wedge and then finally terminates towards new lows. So this has been the story. I think there is no reason why it shouldn't happen. And this 1, 2, and 3, I think that should be the bottom in the euro for a substantial amount of time. After that, I think the euro will stage a significant bounce back, retracing all the way till 1.12, which is the important level of this entire 2022. So this is my expectation about the euro. We are going to see a big plunge in the euro, and then a substantial rise also heading towards the end of the year in the euro market. So we are bearish on euro INR, GBP INR. Let us see where markets open tomorrow, and उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन अभी हम कर लेते हैं. So चैनल को दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. इन द मीन टाइम लेट मी ओपन द यूरो करेंसी चार्ट्स, एंड हियर वी आर. सो यूएसडी आईएनआर की हम बात करेंगे तो इस पे हम बेरिश हैं, बट आई थिंक सम अपसाइड इज गोइंग टू कम. सो फॉर दिस वीक वी कैन go with 80 rupees as a significant level. We are already sitting at a resistance of 79.80. So in last couple of days we have shorted at 79.80, and we got some downside move, and then on Thursday there was a big surge there was a good dollar demand, and we saw a good up move in the USD INR coming back all the way again at 79.75. So I think this 80 rupees, I think that will be the mob level for entire this week, or at least for tomorrow's session. So हम कह सकते हैं कि 80 rupees जो है ये हमारा एक significant resistance है, and below that we are bearish. पहला टारगेट है 79.75, and second target है सीधे 79.25. So once we start drifting from 79.75, I think we will go all the way back again at 79.25. Above 80 rupees, I think USD INR थोड़ा सा तेजी में रहेगा, and it might do 80.20, not more than that. So 80.25 ये हमारा
एक अपसाइड में टारगेट होगा। अब हम बात करते हैं यूरो आईएनआर और जीबीपी आईएनआर। सो सबसे पहले यूरो की तरफ चलते हैं। सो यूरो ने थर्सडे के दिन, एज वी नो दैट यूरो एंड ब्रिटिश पाउंड बोथ दे स्टेज्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग अप मूव, बट हमने कहा था कि ये वापस से जो है इसमें एक डिक्लाइन आएगा। वी सॉ अ सिमिलर कैंडल हियर एंड विच मार्क द टॉप एंड देन वन स्मॉल कैंडल एंड देन द रेस्ट इज हिस्ट्री। सो अ सिमिलर मूव वाज एक्सपेक्टेड और फ्राइडे के दिन जो है इसमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी भी मिली थी क्योंकि मार्केट ऊपर ही खुला था। थर्सडे रात को मैंने कहा भी था कि अगर आपको यूरो और पाउंड सेम रेट पे मिलते हैं तो यू कैन वेरी इजीली यू कैन शॉर्ट एंड यू कैन प्रॉफिट एटलीस्ट लाइक 40-50 पैसे इंट्राडे। और ये दोनों में हुआ, यूरो में भी हुआ एंड ब्रिटिश पाउंड में भी हुआ। सो दोज वर सम गुड ट्रेड्स। नाउ यूरो की अगर हम बात करें तो दोस्तों व्यू ओवरऑल बेरिश है। 82.50 या 82.60 ये जो स्तर है ये हमारा एक ट्रेंड डिसाइडिंग लेवल होगा। सो दिस विल बी अवर मेक और ब्रेक लेवल विच इज से 82.60, 82.50, 82.60। जब तक यूरो इसको नहीं क्रॉस करता है वी विल बी ऑन दी शॉर्ट साइड। और हमारा पहला जो एक्चुअल टारगेट होगा ये थर्सडे के कैंडल का बॉटम होगा विच इज योर 81.60। and below this candle I think euro बच नहीं पाएगा। below this candle I think it is going all the way to take out this candle bottom, जो कि मैंने पहले ही फोरकास्ट किया है कि ये जो बॉटम है ये ब्रेक होगा विच इज से 80.5। सो अगला जो टारगेट है वो हो जाएगा 80.5 और 80.5 के नीचे फिर यूरो आईएनआर में काफ़ी सिग्निफिकेंट डिक्लाइंस फॉर मैनी डेज यू विल सी अ सस्टेन्ड एंड अ सेक्युलर डिक्लाइन इन द यूरो आईएनआर। मान लीजिए अगर ये तेजी में आता है, ये ब्रेक करता है तो इनिशियली हम इसमें पहले तो शॉर्ट्स में से एग्जिट करेंगे, लॉन्ग इतने इमीडिएटली हम करेंगे नहीं। वी वुड लाइक टू सी हाउ इट बिहेव्स क्योंकि ये पहले भी धोखा दे चुका है। अगर आप चार्ट्स को देखेंगे तो यहाँ भी इसने जो है यही चीज़ किया। इट शोड सम स्ट्रेंथ बट अगेन गेव अप। सो आई थिंक क्योंकि फंडामेंटली यूरो में प्रॉब्लम है, पूरा यूरोपियन कंट्रीज में प्रॉब्लम है। सो आई थिंक इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी। बट सपोज टेक्निकली अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हमें लॉन्ग करने का भी मौका मिलेगा। एंड इन दैट केस अवर फर्स्ट टारगेट विल बी दिस रेड कैंडल हाई विच इज एट 83.25। so 83.25 can be one target and then there is a small gap area on the futures which is near 83.80। so we will go with these two levels and let's see क्या होता है इसमें। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पेयर जो है ये है जीबीपी आईएनआर एंड देन जेपीवाई आईएनआर बचा है। सो जीबीपी आईएनआर में अगेन वी आर बेरिश और फ्राइडे के दिन इसमें सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ। अगेन वी हैव अ डबल टॉप सिचुएशन, 97.40 का हाई प्रिंट हुआ था एंड देन इट स्टार्टेड टू डिक्लाइन। सो लेवल्स लगभग सेम है, 97.65 मैंने आपको दिया था। सो ये जो पूरा स्लैब है 97.5, 97.65, दिस इज द शॉर्टिंग एरिया and on the lower side you have 96.3 as the profit booking। so levels यहाँ पे मैं mention कर देता हूँ। for GBP INR the make or break level is your 97.65। so below that we are bearish, पहला target है 96.65 and which is this candle bottom। below this I think it will terminate this time। so below 96.65 I think straight away we should hit 95.65 and then all these downsides are open। so I will just go with 95.65 for this week। above 97.65 I think it can go till 98.20, not more than that, 98.25। और मीडियम टर्म में मेरा ये अंदाजा है कि 98 के ऊपर मुझे ये करेंसी नहीं दिख रहा है। सो आई डोंट सी इट गोइंग अबव 98। आई थिंक इट विल मीट लॉट ऑफ रेजिस्टेंस। लास्ट पेयर जो है ये है जेपीवाई आईएनआर। सो इसमें भी काफ़ी अच्छी डिक्लाइन हुई है और इसमें भी वही लेवल्स हैं लगभग जो लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन किया था। सो दैट्स द गैप एरिया 60.20, दिस इज द रेजिस्टेंस। सो एनी अप मूव दैट कम्स यू नीड टू शॉर्ट एंड ऑन द लोअर साइड वी अगेन हैव अ ह्यूज गैप एट 59। सो लगभग ये 59 से 60, 60.25, एक सवा एक रुपए के रेंज में ही मुझे ये दिखाई दे रहा है। आई थिंक इट विल कंसोलिडेट फॉर few more days before it actually starts to take a decisive move। so similar चीज USD JPY पे भी दिख रहा है और यहाँ भी मेरे ख्याल से यही रहने वाला है। so pretty much that sums the entire currency analysis। चारों पेयर्स को हमने एनालाइज किया है
एंड नाउ लेट्स कम बैक टू अवर मेन स्क्रीन और हम यहाँ पे बाकी मार्केट्स को भी एक बार चेक कर लेते हैं। दोस्तों इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, एक बार मैं आपको अपडेट देता हूँ कि नेक्स्ट जो ट्रेनिंग है दैट इज scheduled on next weekend, which is August 20th and 21st. So hardly 4 5 days are left. So anybody who wishes to join, you can WhatsApp immediately and you can join for this training scheduled on Saturday and Sunday. And once you join, you will be added in the Telegram group support that we have for all students for a period of 3 months. So don't miss this opportunity. A lot of things are going to be covered here in a span of 2 days. Now let's have a look at the commodities market, जो कि आज बहुत ही सॉलिड तरीके से बिहेव कर रहा है. अनफॉर्चुनेटली टुडे वी हैव अ हॉलीडे ड्यू टू 15th of August, और एल्स जो हमारा जो कमोडिटी पे जो कॉल्स था, जैसे बेरिश गोल्ड, गोल्ड इज डाउन मैसिवली, क्रूड इज डाउन मैसिवली. सो WTI को अगर हम देखेंगे तो आज बहुत ही बुरी तरीके से ये डाउन है, और अगर MCX खुला होता तो आज कम से कम ये 500 पॉइंट आपको प्रॉफिट दे देता. सो लास्ट वीक व्यू वाज वेरी क्लियर कि इसमें $94 तक कोई एक अपमूव आता है, वो हमें फेड करना है. हमने इसे जो है थर्सडे रात को, मुझे याद है कि 75.50 चल रहा था या 75.35 चल रहा था, तभी भी मैंने आपसे कहा था कि इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट करके जाना चाहिए, या पुट ऑप्शन आप लेके जा सकते हो. एंड फ्राइडे के दिन इसमें बहुत ही सॉलिड तरीके से जो है मूव्स हमें देखने को मिले. जो लोग ग्रुप में हैं वो भी जानते हैं, दो चार अच्छे अच्छे इसमें स्विंग्स लगे थे, 70 points, 100 points, 50 points. So overall, it was a very great day for shorting crude. And today you can see it is on the verge of making a new low. So this was the analysis that once $94 is done, we should head back again towards the 86 to 80, $83, and then that should mark some sort of a bottom. And यहाँ से अगर रिवर्सल होगा लॉन्ग साइड में, तो फिर हम लॉन्ग साइड में प्ले करेंगे, एंड द लॉन्ग साइड विल रन फॉर at least for 2000 points bare minimum. So from this around 84 $86 के आसपास से हमें लगभग $110 के आसपास की रैली हमें देखने को मिलेगी आने वाले 1 2 महीनों में, 3 महीने में. सो दैट्स द व्यू एज ऑफ नाउ. सो टुडे इट इज क्लोज्ड. लेट्स सी अब कल कहाँ खुलता है, वी डोंट नो वेयर इट विल ओपन. सो हम कल के हिसाब से फिर फ्रेश प्लान बनाएंगे. अगर MCX की मैं बात करूं तो मेरे ख्याल से कल अगेन इट शुड ओपन बिलो 6900 इफ द कॉमिक्स प्राइसेस आर हेल्ड, एंड 6600 का आसपास का जो टारगेट था, 66 6700 के आसपास, आई थिंक ये प्रिटी मच हो जाएगा. एंड देन वी विल सी वेयर टू गो फॉर लॉन्ग्स. सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. नाउ अगर ये 7000 के नीचे गैप डाउन खुलता है तो इसमें फ्रेश शॉर्टिंग भी हम ट्राई करेंगे विद सम stop loss, not more, with some stop loss, and possibly we can get intraday 6600 also. Let us see. ये तो अब कल ही पता चलेगा. अगर हम गोल्ड की बात करें तो अगेन गोल्ड वाज एडवाइज्ड टू शॉर्ट. लास्ट वीकली एनालिसिस में भी मैंने बताया था कि 52 785 एंड दीज लेवल्स आर वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक, और गोल्ड में जो है हमें शॉर्टिंग करना चाहिए, एंड द नेक्स्ट leg should be towards 50,000 straight away. So this is again a very simple analysis that I had presented, and कुछ लोगों ने जो है गोल्ड को शॉर्ट भी किया था 1 2 दिन, एंड टुडे कॉमिक्स पे गोल्ड जो है काफी नीचे है. if you can see the spot chart of कॉमिक्स, today it's making a very bearish candle. So let's see कल कहाँ खुलता है. बेरिशनेस जो है गोल्ड में परसिस्ट करने वाली है. दैट्स ऑल प्रीटी मच ऑन दी MCX. बाकी भी कॉपर वगैरह हैं, तो कॉपर ने भी एक अच्छा, आई थिंक कॉपर इज ऑन द वर्ज ऑफ पुटिंग अ टॉप हियर समवेयर नियर 685 695. सो आई थिंक आई विल बी बेरिश ऑन कॉपर. अगर कल मार्केट एक बार खुल जाए उसके बाद यहाँ पे आई थिंक कॉपर विल मेक अ टॉप समवेयर हियर 685 690 के जोन में यहाँ पे, एंड देन अगेन वी शुड स्टार्ट एट लीस्ट 640 एंड देन पॉसिबली 600. सो लास्ट टाइम 640 से ही मैंने रैली की सजेशन दी थी कि पहला टारगेट दिया था 665, लाइक 666, विच वाज अ बिग टारगेट ऑफ 26 पॉइंट्स, एंड देन नेक्स्ट टारगेट था 685, आई थिंक, विच वाज डन ऑन फ्राइडे. सो लेट्स सी नेक्स्ट अब जो डेक्लाइन हम करेंगे दैट विल बी टुवर्ड्स 612. 640 पहला टारगेट हो जाएगा और 610 दूसरा टारगेट हो जाएगा, समवेयर फ्रॉम 685 to 695, समवेयर हियर.
copper should peak out. So that's the analysis for copper. Now let's quickly have a look at the Ethereum and Bitcoin. So I think word of caution, 2000 का level Ethereum पे hit हो चुका है. I think bull should be out for now, and bears can now start to take some control. Bitcoin is again making a bearish engulfing candle. अभी तक बिटकॉइन ने 26,000 का लेवल क्रॉस नहीं किया है जो मैंने लास्ट वीक दिया था, विच इज द लाइन इन द सैंड. जब तक 26,000 के नीचे है बिटकॉइन क्रैक ऑल द वे towards new lows like 16,000, 18,000, 12,000. So let's see bitcoin क्या क्या करता है. 26,000 के नीचे जब तक है तब तक bearish है. Trade. So that's the update over there. Now let's quickly have a look at the Nifty and Banknifty. So last week was a very clear rally on the markets, and even on Friday there was a simple up move on Nifty and Banknifty both, especially Banknifty. So what's the plan ahead? See, we have made 4 weeks of consecutive bullish candle. So consecutive four candles are pretty rare to see. Very rarely we see or we come across four consecutive candles. Now whenever market moves in this kind of a fashion, it's strong, but there is always some sort of trouble also. Now in this market, I think there is a gap at 17,935. So if you look at this Nifty spot chart, there is a gap. There is a small gap pending at 17,935. So I think for this week, the market is poised to behave in a little random manner. Random manner इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि I think the sweet part of the up move was say from say 16,000 level above this gap to this area, which I think is about to be tested. And then you will see the famous resistance zone coming here. Now, last week मैंने आपको explain किया था कि because this is so much obvious, two things are likely to happen. Either we will undershoot and start some sort of a reversal, or we will overshoot, and then अगर हम कोई भी correction नहीं करते हैं, this market will go all the way towards 19,000 and then a huge slump. सो लेट्स सी आने वाले 2 हफ्ते जैसा मैंने अभी बताया कि वेरी क्रूशियल है. सो वी विल सी हाउ दीज मार्केट्स बिहेव. नाउ फॉर दिस वीक लेवल के हिसाब से काम करना ही सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है. मार्केट को आउटगेस करने का कोई मतलब नहीं है. ये चीज़ मैं पिछले 4 हफ्ते से कह रहा हूँ. डोंट शॉर्ट एंड डोंट आउटगेस द मार्केट. डोंट फ्रंट रन द मार्केट विच एवर साइड यू आर ट्रेडिंग. सो मॉब लेवल क्या होगा? बहुत ही सिंपल शब्दों में द मॉब लेवल फॉर this week should be mob level for this week should be 17,780. Okay, now this particular level I've been giving since last 3 days. I was expecting कि Friday को एक बार टेस्ट हो जाएगा, but Friday को हुआ नहीं. So this is the mob level 17,780. First target on the downside is your 17,600. Okay, and second target is 17,480. Now on the higher side, first target is 17,935 and then 18,060. नाउ लेवल्स तो बहुत ही प्रिसाइज हैं. लेवल्स काफ़ी सिंपल हैं, नीट क्लीन लेवल्स हैं. लेवल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो वी शुड डिस्कस दिस सिनारियो क्योंकि इस वीक में ना इट्स ऑल अबाउट द सिनारियो प्लानिंग. सो नाउ सी इफ द ग्लोबल क्यूज आर नेगेटिव थोड़ा सा, तो आई थिंक कल के दिन ट्यूसडे के दिन मार्केट हो सकता है थोड़ा सॉफ्ट ओपनिंग दे. तो इंट्राडे कैसे ट्रेड करना है ये तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कल के लिए. बट ओवरऑल फ्रॉम अ वीकली परस्पेक्टिव आई वुड लाइक टू से दैट if the market opens tomorrow like soft अगर नीचे की तरफ, then the market has a very good support at 17,650 level on Nifty spot. 650 के आसपास अच्छा सपोर्ट है, and I think market should take support. और अगेन ये मार्केट जो है ऊपर जाना चाहिए और 17,780 का ये एक लेवल मार्केट फुलफिल करना चाहिए. ठीक है, विच विल हिट द वीकली मॉब लेवल ऑल्सो. आफ्टर दैट अगर ये मार्केट वहीं क्लोज होता है या स्ट्रेंथ ही मेंटेन करता है, किसी भी किस्म की वापस से ब्रेकडाउन नहीं होती है, तो आई थिंक दिस मार्केट विल अगेन ओपन गैप अप अबाउट दिस लेवल and directly go to 17,935. Sorry, 17,935. Okay, which is this, and that should be also done and dusted. After that
आफ्टर दैट यू नो द रियल टेस्ट बिगिंस। ठीक है, तो यहाँ तक कि ये स्क्रिप्ट ऐसी है जो मेरे ख्याल से ऐसे चलना चाहिए कि पहले सॉफ्ट ओपनिंग, देन 17,650, टेक सपोर्ट, गोज टू 17,780, यहाँ पे हम क्लोजर देखेंगे। अगर हायर लेवल्स पे ही है तो कंटिन्यू करो लॉन्ग्स को, और डे लो को आप ट्रेल कर सकते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट। and next day there should be gap up opening, we should go and hit 17,935, thereby completing the objective of fulfilling that pending gap, and then let's see how it closes। ठीक है, अब उसके बाद अगर बेरिशनेस की शुरुआत होती है तो वी विल गो फुल शॉर्ट। अगर कोई भी साइन ऑफ वीकनेस नहीं है तो कोई भी तरीके का शॉर्ट नहीं करना है, बिकॉज देन इट माइट टीज थ्रू दिस द 18,000 स्ट्राइक प्राइस, एंड प्रॉब्ली tease through the 18,100 area, and then maybe it gives, so without any kind of a daily bearish reversal signal शॉर्ट साइड में ट्रेड नहीं करना है। ये बात पिछले 4 वीक से कह रहा हूं मैं। once we broke this inside bar, okay, so इसको follow हमेशा करना है। So that's all on the Nifty weekly analysis. Now for tomorrow's session I think there can be some soft opening in the morning time, and we should see 17,650 area जहां से बाइंग हम करना पसंद करेंगे, और 17,550 को आप एज अ स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। सो वी माइट सी सम लोअर लेवल्स, and we can keep this 17,550 as a stop loss, take a long trade for 17,780। so कल का जो मॉब लेवल होगा लाइक फॉर इंट्राडे it should be 17,650 670। so ये जो 20 पॉइंट है that is the very strong support area for Nifty spot फॉर टुमारो सेशन फॉर इंट्राडे। सो हम इस तरीके से मेक और ब्रेक लेवल रख सकते हैं 17,650, 660, 665, ये 20 पॉइंट का जोन है। एंड देन द फर्स्ट टारगेट शुड बी 17,760 एंड 17,830 फॉर इंट्राडे। नाउ सपोज अगर मार्केट इसको नहीं सपोर्ट करता है, मार्केट अगर इसको भी क्रैक करता है तो 500 17,550 दैट शुड बी अवर स्टॉप लॉस। लेट्स सी स्टॉप लॉस हिट होता है कि नहीं होता है। इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो मार्केट कैन बिकम बेरिश, बट आउटराइट आई थिंक बेरिश नहीं होगा। इट विल ट्राई टू डिफेंड इटसेल्फ and complete one more round of a up move। So that's the plan। Now 17,550 that is the last support for markets। अगर मार्केट बेरिशनेस पकड़ लेता है तो फिर हमें सेल ऑन राइज इस हिसाब से करना होगा, और स्टॉप लॉस ऐसे लगाना होगा हमें। ठीक है, सो दैट्स ऑल ऑन द निफ्टी स्पॉट फ्रंट। नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी हैज स्टेज्ड अ वेरी ह्यूज रैली, एंड नाउ द प्लान इज वेरी सिंपल कि जो हमारा पिछला स्विंग हाई था विच वाज नियर 38,750, दैट ऑटोमेटिकली बिकम्स अवर डिफॉल्ट support area। so 38,750, that level is very very important going forward। okay, generally these type of candles they are problematic in nature, but right now the markets are very strong। so हो सकता है ये एक और some sort of one more push on the upside towards 39,750 is very much possible before we break down। so I think we will go with 38,750, this is the swing high, and you can see 38,750 that should be our mob level for this week on Bank Nifty spot। so from a weekly perspective, the weekly make or break level should be 38,750, no doubt about it। this has to be a good area, a good level, and you can see that in the past this has acted as a sort of a very important flip zone। in the past you can see we did not close above these areas, and it offered a lot of resistance this time, whereas we have closed। so by default on the lower time frame, if you see, it would look something like this, that breakout retest, so it should act as support for higher levels। so 38,750 that should be the mob level। इसके नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो ही ये बेरिश होगा। पहला टारगेट होगा 38,380 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 38,080।
Now above 38,750 it is bullish, and we would like to go with 39,450 as a one target and 39,750 as a second target. Now comes the interesting part. इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि देखिए, जैसा निफ्टी में प्लान था कि इट माइट स्टार्ट टू गो डाउन फर्स्ट, हिट 38,750, टेक सपोर्ट एंड स्टार्ट्स टू रैली 450, 39,450 पहला टारगेट डन होना बहुत ही निश्चित वाली बात है. ओके, नाउ आफ्टर दैट कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, क्योंकि if you see this bank nifty is yet to make a new low below this and a new high above this, and since last 6 months we are simply trading in this area. Okay, so suppose अगर ये एक कैंडल है, एक सिंगल कैंडल है, तो ये बाकी जो सारा एक्टिविटी है ना, ये एक और कैंडल में अगर आप कंप्रेस करोगे तो यू विल सी इज एसेंशियली जो लास्ट 6-7 मंथ्स का जो पूरा ट्रेडिंग एक्टिविटी है, इट कैन बी समराइज्ड एज यू कैन से इन द फॉर्म ऑफ अ इनसाइड बार. ओके, इस तरीके का एक इनसाइड बार. नाउ जनरली ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि मार्केट आइदर साइड को एक बार फ्लश करेगा एंड देन इट स्टार्ट्स टू रिवर्स. So this is the part where I'm excited about कि दो चीजें होंगी, या तो मार्केट 38,750 आके 39,450 का लेवल जो है एक बार हिट करेगा एंड देन इट स्टार्ट्स टू डिक्लाइन रैपिडली. ओके, डिक्लाइन का नेचर याद रखना, रैपिडली. अगर ये होता है तो दैट इज ऑल्सो साइन की मार्केट प्रिटी मच it wants to respect the highs and lows of bank nifty. It 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 does not want to flush. So before reversing on the downside, it would like to do this one small up move and quickly fade that up move, a kind of a suckers rally create करके और पूरी तरीके से यू टर्न. तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वो भी एक संकेत होगा, वो भी एक साइन होगा कि बैंक निफ्टी रिवर्स कर रहा है. दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि 750 से इट डज 450, डजंट शो एनी वीकनेस एंड अपना स्ट्रेंथ को मेंटेन रखता है और एक दो दिनों में 750 भी हिट करता है, विच इज समवेयर हियर, एंड इट मेक्स और इट टेक्स आउट जस्ट दिस हाई एंड देन स्टार्ट क्रैशिंग. ठीक है, सो इन दोनों ही सिनारियो में द कॉमन थिंग इज 38,750. सो दैट इज वाई दैट इज द मॉब लेवल. 38,750 जब तक ये प्रोटेक्टेड है, हमें जो है बाय ऑन डिप्स हम कर सकते हैं. 450 एंड 750, दीज टू आर टारगेट्स ऑन द अपसाइड. किस तरीके से रिवर्सल के चांसेस हैं ये भी मैंने आपको एक एक्सपीरियंस के हिसाब से ये चीज मैंने आपको बता दी है. सो दैट्स ऑल ऑन द बैंक निफ्टी फ्रंट. कल इंट्राडे के लिए भी दोस्तों यही लेवल होगा 38,750 एंड टारगेट्स जो है वो थोड़े छोटे हो जाएंगे बट प्रिटी मच लेवल जो है वो यही होगा. सो अगर एक बार हम इंट्राडे चार्ट को देख लें तो आई थिंक इंट्राडे पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल तो यही है 38,750, बट फ्रॉम अ इंट्राडे पर्सपेक्टिव एक माइक्रो लेवल है 38,950. ओके, सो सपोज अगर कल गैप डाउन खुलता है बाजार और 950 के नीचे खुलता है, यानी ये जो सेकेंड हाफ का बेस है इसके अगर नीचे खुलता है तो डायरेक्टली हमें लॉन्ग नहीं करना है. या तो 750 पे आने तो यहाँ से रिवर्सल पे लॉन्ग कीजिए, या फिर ये पूरा अगर नहीं आता है बट 950 को क्रॉस कर देता है तो आप यहाँ फिर लॉन्ग कर सकते हैं और मॉब लेवल को स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं, एंड देन इट शुड गो towards 39, 200, 300 and thereabout. So pretty much it's the same script. So that's all from my side. निफ्टी और बैंक निफ्टी इन दोनों पे डिस्कशन हो चुका है और ज़्यादा फ्रंट रन अभी करना नहीं है मार्केट को. दैट इज़ वाई आई एम नॉट टॉकिंग मच. सिनारियोज जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. If there are any stock queries, so we can discuss, or else we can wind up this session also. So markets will be on tomorrow. 12 more hours to go. 13-14 hours to go. All right. So since I do not see any stock queries, so let's wind up this session for today. And tomorrow we can take all of your stock queries. Thank you so much for watching. Take care. Good night. Yeah, good evening. Jai Mata Di.